Hello everyone, welcome to my new session about ecosystem class, chapter number 12 of class 12th. I am Dibyaranjan Parida. I am pursuing my second year MBBS in AIMS Bhubaneswar right now. So today our topic of discussion is ecosystem. So ecosystem corner. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature. So the first ecosystem corner, ecosystem nature of a functional unit where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. जोटिकी लिविंग एनवायरनमेंट माने निज भितर इंटरैक्ट करंती आ फिजिकल एनवायरनमेंट संगे इंटरैक्ट करंती ecosystem varies greatly in size from small pond to a large forest or a sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. Entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of all local ecosystem on Earth. Since the system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide into basic categories, namely the terrestrial and aquatic. Terrestrial माने स्थल भूमि उपरे, aquatic माने पानी भितरे. तो terrestrial माने कौन लैंड उपरे aquatic माने वाटर बॉडीज रे forest grassland desert and are some examples of terrestrial ecosystems. Pond lake wetland river estuary are some examples of aquatic ecosystem. crop field crop fields and an aquarium may also be considered as a man-made ecosystem. Crop field एरिया में चाଷ बास हुए और एक्वेरियम जो पानी रे माछ रखती may also be considered as a man-made ecosystem. We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input by the productivity, transfer of energy, food chain, web, nutrient cycle, and the output by degradation and energy loss. We will also look at the relationships like cycles, chains, webs that are created as a result of this energy flow within the system and their interrelationships. तो हमें ये चैप्टर कौन देखा ना इकोसिस्टम और वेरियस various aspects ଯେମିତି ତାର input the productivity transfer of energy যেটা କି food chain food web nutrient cycling ଆଉ output ଯେମିତି degradation ଆଉ energy loss ବିଷୟରେ ପଢିବା ecosystem ecosystem structure and function. In earlier classes we have looked at various components of environment abiotic and biotic. Abiotic माने जेड़ा temperature land soil एड़ा सब abiotic. Abiotic होचे एति सब living organisms रहिले. You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surrounding. Let us look at these components in more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of ecosystem. Interaction of abiotic and biotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. The interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is a characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of animal species of an ecosystem gives its species composition. Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. Vertical stratification कौन ना vertical distribution of different species occupying different level माने ऊपर गोटे जगह रे ऊपर जो जदि हम देखिबा सेत जो एग्जांपल भी एटी लिखि जे trees occupies the top vertical strata or layer of forest, shrubs at the second, herbs grasses occupy the bottom layer माने गोटे जगह रे vertical माने ऊपर जो जदि हम distribution देखिबा ये ट्रीज माने सबटो बड़ बड़ सब सबटो ऊपर लेवल रे था तापर shrub जेटा shrub माने होची छोटा गछ तमा सेकंड लेवल रे थांती और herbs and grasses कोन ना सबटो तळ जगह थांती जेने सबटो छोटा तमार सबटो तळ लेयर को ऑक्युपाई करथान ताऊ कोन स्ट्रैटिफिकेशन माने तने कोन में बुझला हमें ना vertical distribution of different species occupying different levels. Vertical distribution of different species occupying different levels. तापर कोन लिखवा मेन कथा आसला. The components of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. ताने components of ecosystem कौन ना productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycling. एटा मन रखो एग्जाम सब बेले आसे. Which of the following are the components of ecosystem? But which of the following are not the ecosystem? No, not the components of ecosystem. ये कौन है productivity किसी ଗୋଟେ बनेवा जेटा कि हम पढ़ते input बोली पढ़ते decomposition में जान जो गोटे जिनस मरीगला पर गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरीगला पर ताको जो माइक्रोब्स माने
माइक्रोस्कोप जो कीटाणु मान जो डिग्रेड कर दियंती सब नष्ट कर दियंती कहते डिकम्पोजिशन। एनर्जी फ्लो आम तार केमती गोटे ये रु आउ जो गोटे स्पेसीस को केमती एनर्जी फ्लो हम माने जमती प्रोड्यूसर हमर के प्रोड्यूसर के ग्रीन प्लांट्स को जतले कंज्यूमर्स माने खाइबे माने हार्बिवर्स प्राइमरी कंज्यूमर जत खाइबे तांको बाको केमती के एनर्जी जीवो पुणी हार्बिवर्स जत कार्निवर्स माने खाइबे से तांकर एनर्जी सेटा केमती जीवो तांको बाको सेटा कोनती एनर्जी फ्लो। आ न्यूट्रिएंट साइकिल माने धर तम डिग्रेड गोटे ये हे होला तापर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सब सॉइल रे रहिला ताको केमती पुणी रीअपटेक करिवो गोटे जगह रे गोटे रीअपटेक हो त साइक्लिंग हो केमती टोटल अर्थ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट केमती समान रहबो सेटा होची न्यूट्रिएंट साइकिल। तो एही चारटा तला प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होची चारटा कंपोनेंट इकोसिस्टम रो। To understand each of to understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take an example of a small pond. ठीक है this is fairly a sustainable self-sustainable unit, rather simple example that explain even complex interaction that exist in a aquatic ecosystem. हमें pond example लेके पूछा a pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic characters components of an ecosystem are well exhibited। तो कह रहा तो पॉन्ड गोटे सालो वाटर बॉडी जेटा होचे गड़िया पोखरी जेतरे कि ऊपर जो चारटा जाको बेसिक कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो न्यूट्रिशन हम चारटा जाको देख परिया। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल द dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond। ताले कोन कहला ना एबायोटिक कंपोनेंट के रहला वाटर एबायोटिक कंपोनेंट होची वाटर पोखर रो एबायोटिक कंपोनेंट होची वाटर आता है तो सब dissolved with all the dissolved organic and inorganic substances and rich soil deposit as the bottom of the pond। तर पहला एबायोटिक कंपोनेंट कोन ना वाटर तार dissolved in the organic और inorganic molecules और तार जो तळ जो माटी रहला soil रहला सेटा कोन ना or inorganic substance धरा होचे abiotic components of the pond। तापर the solar input the cycle of temperature day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond। The autotrophic component include phytoplankton and algae and the floating submerged or marginal plants found at the edges। स्टडी कोन लिखला जे abiotic component लिखला abiotic component रे एमाने भी आसे कोन ना solar input cycle of temperature day length other climatic condition regulate the rate of function of the entire function। तार जो environmental components environmental factors जमते के solar input cycle of temperature day length and other climatic conditions ସେମାନେ को करନ୍ତି ना rate of function of the entire product को रेगुलेट करନ୍ତି जे खरा दिन जदि बेसी वार्म कंडीशन देबो ताने बेसी फाइटोप्लांटन माने बढ़िबे ताको माछ माने खाइबो ताको बेसी खाइबा मिलिबो आ जदि शीत जदि हेतो ताको कम मिलिबो तो एटा होची एंटायर पॉन्ड रो रेट ऑफ फंक्शन डिटरमाइन के करे ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटोप्लांट ऑटोट्रॉफिक लेकिन जब निज खाद्य निज पहुंचती के ना फाइटोप्लांटन सम alga and the floating submerged or marginal plants found at the edge। फाइटोप्लांट हम देखिनो फाइटो छोटे छोटे गछ algae तो हम जानिछे then floating submerged marginal plants जो भासुचे के अधा बुड़ा के पूरा बुड़ी गिरी थवा जो प्लांट्स समय कोन करती समय होचले ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स समय होची autotrophic components of the pond। The consumers are represented by the zooplankton। The consumers are represented by the zooplankton। zooplankton माने कोन जमा जो एनिमल या किंगडम जति जे रहले समान होबे zooplankton। The free swimming and bottom dwelling forms। The consumers are represented by zooplankton, the free swimming and bottom dwelling forms। The decomposers are the fungi, bacteria, flagellate। Decomposers are the fungi, bacteria, flagellate। तो जानिछो ये fungi, bacteria और जानिछो जो fungi, bacteria और plant को जाको हम decomposer बोली को फ्लैजेलेट्स मान को डिकम्पोजर मान को तमन जते डेड बॉडी को डिकम्पोज करते तो सेठी लिखला कोन
Now fungi, bacteria, flagellate, एମାନେ होचे decomposers that are abundant in the bottom pond. Bottom pond रे बहुत अधिक number रे थांती. This system performs all the functions of any ecosystem or of the biosphere as a whole. That is conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of sun by the autotrophs, consumption of autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for use of auto or used by the autotrophs. These events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy toward the higher trophic level and its dissipation and loss at the heat to the environment. ଏଥିରେ କଣ ଲେଖିଲା ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ପଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପୁରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆମେ ଆରାମସେ ଦେଖେଇ ପାରିବା କି ଇକୋସିଷ୍ଟମ କେମିତି ତ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଲା ଏଠି ସେ ଲେଖିଲା ଏବାଇଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଏଠି ଲେଖିଲା ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ସ କିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବା ବନଉଥିଲେ ଏଠି ଲେଖିଲା ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ସ କିଏ ଥିଲେ କିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲେ ତ ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲା ଯେ ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଫ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଫଙ୍କସନ କୁ ଏଜ ଏ ହୋଲ କରୁଛି କେମିତି ନା conversion of inorganic material into organic material with the help of radiant energy of sun by the autotrophs. Autotrophs ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା inorganic material को organic material convert କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଦେଇକି ନା solar energy यूज କରିକି sun ର radiant energy को यूज କରିକି ତାପରେ କଣ ନା consumption of the autotrophs by the heterotrophs heterotrophs ମାନେ ଖାଇଗଲେ then decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for use of autotrophs ଏଠି ଯେ ଲେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଫଞ୍ଜାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ଲାଜେଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କଲେ ବଡିକୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ବାହାରିଲା ତାକୁ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଲେ ତାକୁ ମିନେରାଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା of the dead matter to release them back for the use of autotrophs. These events are repeated over and over again. ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ହଉଛି. There is unidirectional movement of energy towards high trophic level. High trophic level ମାନେ କଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡେ ପିରାମିଡ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ଦେଖନ୍ତି ତଳରୁ ଉପର ଲେଭେଲ ମାନେ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ସ ମାନେ ଯେମାନେ ପ୍ରାଇମରୀ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ତାପରେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇମରୀ କନଜ୍ୟୁମର ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଜ୍ୟୁମର ଏମିତି ତଳରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ପିରାମିଡରେ ଏନର୍ଜି କଣ ହୁଏ ନା କମି କମି ଯାଏ ଏନର୍ଜିର ଫ୍ଲୋ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଟା ବି ଡିସିପେଟ ହେଇଯାଏ କେମିତି ନା ଡିସିପେସନ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଅଫ ଦ ହିଟ୍ ଟୁ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ତଳରୁ ଉପର ଟ୍ରଫିକ ଲେଭେଲ ଲୋଅର ଟ୍ରଫିକ ଲେଭେଲରୁ ହାଇ ଟ୍ରଫିକ ଲେଭେଲକୁ ଫ୍ଲୋ करे यूनिडायरेक्शनल फ्लो करे यूनिडायरेक्शनल ବୋଲି ମନେ ରଖିବ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हुए ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଲେଭେଲ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏନର୍ଜିର ଡିସିପେସନ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଏଜ ଏ ହିଟ୍ ଅଫ ଟୁ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଏନର୍ଜି ଗୁଡା କେତେବେଳେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହୁଏ ଆଉ ବାକି ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ହିଟ୍ ଆଉ ହିଟ୍ ରେ ଲସ୍ ଆଉ ଡିସିପେସନ ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ଏଟା ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଆମକୁ କଣ କଣ ଶିଖଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କିଏ ଥିଲା ନା ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ ପଢିବା A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. That is कौन लिखला? A constant input of solar energy is basic requirement for any ecosystem to function and sustain. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଯଦି ଚାଲିଗଲା କି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବି ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ କାମ କଲାନି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିପାରିବନି ପୁରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିପାରିବନି ପୁରା ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ सोलर एनर्जी ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଏତିକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଲାଇଫ ସଷ୍ଟେନ କରୁଛେ ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ଇନପୁଟ ଅଫ सोलर एनर्जी ପାଇଁ କରୁଛି सोलर एनर्जी କଣ କରୁଛି ନା ଇନଅର୍ଗାନିକ ମେଟେରିଆଲ କୁ ଅର୍ଗାନିକ ମେଟେରିଆଲ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା सोलर एनर्जी ଲେଖିଲେ କଣ ନା ବେସିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫର ଏନି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଟୁ ଫଙ୍କସନ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନ primary production is defined primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis तो कौन लिखला प्राइमरी प्रोडक्शन होची अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बायोमास माने बायोमास मतलब ही ऑर्गेनिक मैटर तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम by plants during photosynthesis that is primary production it is expressed in the term of weight or energy एटा को टर्म में एक्सप्रेस है ना weight रे हम करे ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी किलो ना किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर माने कोन पर यूनिट एरिया लिखछि ना एटी पर यूनिट एरिया लिखिछि तो पर यूनिट एरिया लिखछि बोले एटी मीटर स्क्वायर रहछि पर यूनिट एरिया लिखछि बोली एटा पर मीटर स्क्वायर लिखिछि माने एरिया
The rate of biomass production is called productivity. तो कौन लिखला ना the rate of biomass production is called productivity. क्या rate of biomass formation होगी तब ना productivity कहला. It is expressed in the term of gram per meter square per year or kilocalorie per meter square per year to compare the productivity of different ecosystem. हमें कौन निकला ना बायोमास प्रोडक्शन को कौन कहला ना ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर अगर यूनिट टाइम रे यदि पचाले जे पर ईयर रे यूनिट टाइम को हमें एठी ईयर बनेले तने गोटे ईयर रे केते फॉर्मेशन होची बायोमास तो ताको हमें लिखिबा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एटा लिखिबा जे को टर्म एक्सप्रेस हुए. It can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. एटा को हमें कोसे डिवाइड करिया ना gross primary productivity को और net primary productivity. then gross primary productivity कौन gross primary productivity is an ecosystem is the of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. एटा पूरा इजीली लिख देला तने gross primary productivity कहा को जाय एटा इकोसिस्टम रे rate of formation of rate of production of organic matter को rate of production of organic matter during photosynthesis को कौन कहा जाए ना gross primary productivity. A considerable amount of GPP is utilized by plant during in respiration. तार कौन गला जति से gross primary productivity formation करा जति से biomass formation करा photosynthesis जो energy से utilize करा तार बहुत बड़ा को amount उतर जाए ना respiration रो waste है respiration is the waste process for the plant रेस्पिरेटर से निज प्लांट रो जति एक्टिविटी करियो माइटोकॉन्ड्रिया नै कि तो जो सूर्य टू जो एनर्जी आसला तार जो फोटोसिंथेसिस करी से एनर्जी यूटिलाइज करथला सोडा किजे से निजर निजे जिंदा रहया पे करियो निजे पहुंचिया पे करियो सस्टेन करिया पे करियो तो तार जो माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन टाइम रे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो जीटीपी एटीपी सब रिलीज हो सेडा कोन रेस्पिरेशन तार कोन ना एनर्जी यूटिलाइज होला तो सेडा कोन लिखला ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस तब को कोला ना रेस्पिरेशन लॉस को आला तेरा कौन को आला ना रेस्पिरेशन लॉस को आला तेरा जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल टू एनपीपी तेरा कौन को आला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs, that is herbivores or decomposers. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer. कंज्यूमर तो किसी बना दे फिर भी तांको जो बॉडी जो खाएगी मसल्स बढ़ला ताप तांको जो आउजन खाएगी ताको कहला ना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहला सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का कहला जदी कंज्यूमर्स माने किसी फॉर्मेशन करे ताको आजु सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जदी rate of formation of new organic matter by consumers is called secondary productivity. तार एटी कोन लिखला जीपीपी तो प्लांट बनेला प्रबल ता जति पत्र रहला जीपीपी कोन ला प्लांट र पत्र रहला ता रेस्पिरेटरी लॉस कोन प्लांट निजो ग्रोथ पे यूटिलाइज कला तापर एनपीपी कोन जति के बाकी रहला कोन का पे ना हमरो कंज्यूमर्स मान को पे तो एटी लिखला एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रोफ्स herbivores or decomposers. तापर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी depends on the plant species inhibiting in a particular area. It also depends on a variety of environmental factors, availability of nutrients and photosynthesis capacity of plants. like primary productivity काका पे डिपेंड करेला सही जगह प्लांट स्पेसिस कोन होइछि से भलो से करि पारछि प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्शन ना करि पारुनी तब it also depends on the variety of environment factor ଉପରେ भी depend करे obviously then the availability of nutrient or photosynthetic capacity of the plant environment factor ଯଦି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଯଦି ample sunlight ନଥିବ ତାହେଲେ production କମ ହବ ଯଦି ତାପରେ କଣ availability of nutrient ଯଦି ଗୋଟେ sand ନା desert area ତ ତାଙ୍କର କିଛି nutrient ନାହିଁ ତ ସେଠି ଗଛ ବଢି ପାରିବନି ତ ସେଠି କିଛି production ହବନି ତାପରେ କଣ ନା photosynthetic capacity of plant ର photosynthetic capacity କେତେ ରହିବା କଥା ଗୋଟେ desert plant ଯାହାର କି ପତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଭଲସେ photosynthesis କରିପାରିବନି ଯେମିତି କି ଆମର evergreen forest plant ମାନେ କରିବେ ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ primary productivity of the ecosystem କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି तापर कोन लिखला तापर जहा लिखछि तो मन रखियो ता एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर रो एनपीपी होल बायोस्फीयर रो एनपीपी कोन
ना approximately 170 billion tons of dry weight of organic matter, 170 billion tons of dry weight of organic matter, ଯେଉଁଥିରେ କି 70% ହଉଛି ନା despite occupying 70% of the surface, productivity of oceans are only 55 billion tons. ocean of productivity only 55 billion tons. ସେଇଠି ଦେଖାଦେଲା ଯଦିଓ ଆମ earth ରେ ଯଦି ଆମ earth ରେ 70% ହଉଛି ocean, 70% ହଉଛି ocean, 30% ହଉଛି land. फिर भी कौन ना ocean ମାନଙ୍କର NPP ହଉଛି 55 billion tons. ଯୋଉଠି କି ତାହେଲେ ବାକି କେତେ ରହିଲା sir 15 billion tons. sir 15 billion tons ହଉଛି surface ର, ocean ମାନଙ୍କର ହଉଛି 50 billion tons. କାହିଁକି 50 billion tons ହେଲା ନା 55 billion tons ହେଲା କାହିଁକି ଏତେ କମ ହେଲା? କାହିଁକି ନା obviously main reason କାହିଁକି ହେଲା ଏଠି ଆମେ photosynthetic capacity of ସେଠି ଯେତିକି ସେଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି କମ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ବଡ ବଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କର ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ କାପାସିଟି ଅଧିକା, ସେଇଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କଣ ହବ ନା ଏନପିପି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହବ। ତାପରେ କଣ ପଢିବା ଆମ ଟପିକ ନା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଗଲା, ଏବେ ପଢିବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ। You may have heard the earthworm being friend as farmer's friend. earthworm କଣ ନା earthworm ହଉଛି କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। You may have heard of the earthworm being referred to as farmer's friend. This is because they help in breakdown of complex organic matter as well as in loosening the soil. ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର କୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଟିକୁ ଲୁଜନିଂ ଅଫ ଦ ସଏଲ ମାନେ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରନ୍ତି। ମାଟିକୁ ହାଲକା କଲେ କଣ ହବ, ମାଟି ଭିତରେ ଭଲ ଏୟାର ପାସ୍ ହବ। ଭଲ ଏୟାର ପାସ୍ ରେ ମାଟି ଯାଦା ଲାଇକ ସେଟା ଦରକାର। ମାଟି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଆମର ରୁଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରୁଟ୍ସ ବି ଯେମିତି ରେସ୍ପିରେସନ କରିପାରିବ, ତ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରିବାଟା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଆକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients, and the process is called decomposition. कौन कहला process of decomposition? Decomposer माने कौन करती? Decomposer माने complex organic material को inorganic substance like simple inorganic substance जैसे carbon dioxide, water और nutrient रे ये करती, and the process is called decomposition. Dead plants remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals, including fecal matters, constitutes detritus, which is the raw material for decomposition. तारे कौन कहला ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ କଣ ଶିଖିଲା ଆମେ ନା ନୂଆ ଟର୍ମ ହଉଛି detritus। detritus କଣ କହିଲା ନା ଡେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛ ଭୂଇଁ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛ ତାର ଭୂଇଁ ଉପରେ ଯାହାବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଲିଭ୍ସ ପତ୍ର ତାର ବାର୍କ ମାନେ ଉପର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଏପିଡର୍ମିସ ଲେୟର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ବାର୍କ ତ ତମେ ପଢିଥିବ ଇଏରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏନାଟମିରେ ପଢିଥିବ। ତାପରେ ବାର୍କ, flowers, dead remains of animals including fecal matters constitute detritus। ମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଭୂଇଁ ଉପରେ ତମକୁ ଯାହା ବି ପଡିଥିବ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ କଣ ନା detritus କୁହାଗଲା। ସେମାନେ କି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହବାକୁ ରେଡି ଥାନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା detritus କୁହାଗଲା, which is the raw material for decomposition. The important steps in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and mineralization. ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ନାଁ ଲେଖିଦେଲା ନୂଆ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ କଣ ନା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ କଣ? ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ କିଏ ନା ଏର୍ଥର ଯିଏ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ କୁ ହାଇଲାଇଟ କରିଦିଅ। ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ ମନେ ରଖିବ। ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ ମାନେ को microorganism nutrients. Detritivores ମାନେ earthworm. Detritivores example earthworm break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. ଆମେ ଏଠି ପଢିଥିଲେ ଯେ earthworm ମାନେ complex organic compound matter କୁ break down କରନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଲା detritus ଯେମିତି ପତ୍ର ଅଛି, ପତ୍ରକୁ ଖାଇକି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସେ ଇଏ earthworm ଯୋଉ ଫିସେସ୍ ବାହାର କରିଦେଲା କି ଉଲ୍ଟି କରିଦେଲା ଯାହା ବି କଲା, ତ ସେଇଟା କଣ କଲା ନା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ କଲା। ଏଟା ଇଜିଲି ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ମାନେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ଗୋଟେ ବଡ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କନଭର୍ଟ କଲେ ତାକୁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ତାକୁ କିଏ କଣ ନା ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ ମାନେ କରନ୍ତି। ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ କି ନା ଏର୍ଥୱର୍ମ ହଉଛି ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ। By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt. By leaching ମାନେ କଣ ହେଲା? leaching ରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉଟା water soluble ଯେତିକି components ଥିଲା, ଯେତିକି water soluble inorganic nutrients ଥିଲା, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି water soluble, ସେମାନେ ତାହେଲେ ପାଣି ପଲେ ସେମାନେ ପାଣି ସହିତ ଭେଦେଇକି କଣ କରନ୍ତି ନା ମାଟିର ପୁରା ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତି ଆଉ unavailable salt ଭାବି
ଥାନ୍ତି ମାନେ ମାଟି ଯଦି ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ସଲ୍ୟୁବଲ ଇଏ ମାନେ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ଇନଅର୍ଗାନିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ମାନେ ଯେତେ ଗଛ ବଢିବାକୁ ଯିବ ବା ଗଛ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ତା ଚେର ତ ସେତିକି ବାଟ ପାଇବନି ତ ସେଇ ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ବା ଇନଅର୍ଗାନିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ସେଠି ରହିଲା ସେମାନେ କିଛି ୟୁଟିଲାଇଜ ରେ ଆସିଲେନି ତ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଅନଆଭେଲେବଲ ସଲ୍ଟ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା ଏଜ ଏ ଅନଆଭେଲେବଲ ସଲ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅନଆଭେଲେବଲ ସଲ୍ଟ ରେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି Bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler organic substances. This process is called catabolism. ताने कौन करेले ना bacterial और fungal enzymes माने degrade करते detritus को bacteria और के fungi bacteria fungal enzymes माने कौन करते हैं ताने enzyme release करते हैं निचरा detritus को simpler organic inorganic substance convert करते हैं ताको कौन कहला ना catabolism तो जान चाहिए कि चीज़ ऐसा करो catabolism कहते तो आमे एठी देखिले जे तमे जेडी पांचटा ना पढले फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ताइ तो फर्स्ट तीनटा गोटे एनवायरनमेंट रे और लास्ट दीटा जेडी ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन अलग एनवायरनमेंट रे ताने मु तुम बुझो धर जो गोटे जगह रे कोन होला ना गोटे पत्र पड़िछि गोटे जगह रे गोटे पत्र पड़िछि गोटे जगह रे गोटे पत्र पड़िछि तार फास्ट कोन होबो तार फास्ट कोन होबो ना फ्रैगमेंटेशन ये कोन होला ना दीटा जिनस बने छोटे 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 कोन बोला छोटे 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 जिनस बनला फ्रैगमेंटेशन के कला डेट्रिवर्स कला तो छोटे छोटे कन्वर्ट कला तब ए छोटे छोटे रु एई पार्ट एति जो तमे देखो एटा तो सपोज करो ना एमनो वाटर सॉल्युबल एमन हेलो वाटर सॉल्युबल सॉल्युबल हेले कोन हबो तने लीचिंग रे पळेबे कोन बना तळे पर अनअवेलेबल सॉल्ट है कि पूरा माटर सब तळे रहबे तापर एठी जे ये रहले वाटर इनसॉल्युबल एटा वाटर इनसॉल्युबल याको कोन करिवे याको कोन करिवे ना बैक्टीरिया माने एठी पसिकी ता भीतर कोन करिवे ना तार डिकम्पोजिशन करिवे डिकम्पोजिशन माने कोन हबो ना कैटाबोलिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म केमती ना पूरा आयरन पार्टिकल बाहर कर देबे आयरन माने ये पूरा मेटल पार्टिकल बाहर कर देबे कार्बन डाइऑक्साइड ये H2S एमपी सब सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट कर दे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर दे ताने कोन होला जदी गोटे जगह रे गोटे डेड बॉडी पड़ रही छी माने डेड लीव्स एक किछ पड़ रही छी ताने फास्ट तार कोन बना तार फ्रैगमेंटेशन के करिवो डेट्रिवर्स माने करिवो डेट्रिवर्स माने के ना अर्थवर्म एग्जांपल हो अर्थवर्म तो डेट्रिवर्स माने कोन करिवे ना डेट्रिटस को छोट छोट सिंपलर ना स्मॉलर पार्टिकल्स ब्रेक डाउन करे ता को फ्रैगमेंटेशन ता क्षेत्र जे बडा वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थो समान पानी सहित पूरा तळକୁ पळेबे सेडा कोन को जो ना लीचिंग आ जहां बाकी रह सेडा को बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स माने डिग्रेड कर दे कि इन सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करिवे ता कोन को हला ना कैटाबोलिज्म तो कोन कहला ना कैटाबोलिज्म तापरे कोन लिखबा ना इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus सब गुडा जो ऊपर जति हम कहि तीनटा जो कथा हरतला सडा detritus simultaneously हुए humidification and mineralization occur during decomposition in the soil then humidification and mineralization can be one decomposition of this in the soil where humidification leads to accumulate a dark color amorphous substance called humus एटी ततला नॉर्मल डेड बॉडी कोन होतला detritus थिला एटा ये कोन ना dark color amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial activity and undergoes decomposition at an extremely slow rate like undergoes decomposition at the extreme slow तो नाम है humus रे characteristics पढ़ले humus कोन ना गोटे dark colored amorphous substance जेटा कि highly resistant to microbial activity ଆଉ कोन ना undergoes decomposition at an extremely slow rate decomposition बहुत slow हुए समान को काहे कि समान माइक्रोबियल एक्शन को बहुत रेजिस्टेंट ना तो समय डिकम्पोजिशन आराम से होबनी तो सही कथा लिखी छी बीइंग colloidal in nature तने कोन लिखे मन रखिया ना ह्यूमस इज colloidal in nature it serves as a reservoir for nutrients एटा कोन ना serves as a reservoir for nutrients ए जो प्रति लाइन रे यार इंपोर्टेंट अछि एग्जाम सब आसीबो आ ह्यूमस जदी ह्यूमिडिफिकेशन बाय ह्यूमस विषय पत्र त एटा सब लिखिया भी होबा एग्जाम रे the humus is further degraded by some microbes and release the inorganic nutrients occur by process known as mineralization
ह्यूमस कौन ना डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ह्यूमस एमती नहीं कि पूरा रेजिस्टेंट कि माइक्रोब पिछ कर परिबेनी ह्यूमस करिवे किंतु ସେମାନେ कौन ना रेट होची बहुत स्लो काहे कि ना ସେମାନେ हाईली रेजिस्टेंट थांती माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत स्लो स्लो आ कौन हुए ना से माइक्रोबियल एक्टिविटी करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जब रिलीज होला त कौन कला ना मिनरलाइजेशन करा त कौन करा मिनरलाइजेशन करा कैटाबोलिज्म मिनरलाइजेशन भीतर कंफ्यूजन बनी कैटाबोलिज्म मिनरलाइजेशन अलगा डेट्रिटस को अगर के बस फ्रैगमेंटेशन करके ताको जदी बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम माने किछ कला ता कुआ जो कैटाबोलिज्म आ यदि ह्यूमस रे जतळे हला ह्यूमस रे हले कोन कुआ जो ना मिनरलाइजेशन ह्यूमस रे हले कोन हबो ना मिनरलाइजेशन decomposition is largely an oxygen requiring process decomposition is largely an oxygen requiring process এটা মনে রাখিব decomposition is more largely oxygen requiring process the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors ତାର କହିଲେ ନା the decomposition କାହା କାହା ଉପରେ depend କରେ decomposition detritus ର chemical composition ଆଉ climatic factor ଉପରେ depend କରେ in a particular climatic condition decomposition rate is slower if decomposition is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar then I'm first like composition of detritus ଉପରେ କେମିତି depend କରୁଛି ଯଦି decomposition and detritus ଯଦି lignin ଆଉ chitin ଭଳିଆ hard substance lignin ଆଉ chitin ଭଳିଆ hard substance କहे lignin ଆଉ chitin ବି resistant to microbial activity ତ ସେଠି decomposition slow ହବ ଆଉ quicker କେମିତି ହବ ଯଦି ସେଥିରେ rich in nitrogen और water soluble substance ଥିବ ଯୋଉଟା କି आराम से कोई भी एंजाइम ताको डिग्रेड कर दबो कोई भी बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिग्रेड कर दो तान से डिकम्पोजिशन क्विकर हबो मेडिसिन एकला केमती डिकम्पोजिशन रो केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करूछ temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes other than environment factor कोन ना temperature और soil moisture and temperature होछ the environment factor जेटा कि डिपेंड करे warm and moist environment favors decomposition whereas low temperature anaerobic inhibit decomposition resulting in build of organic materials then कौन लिखला the warm or moist environment favor कर decomposition और low temperature and anaerobic inhibit करे decomposition resulting in the building of organic material तो नेट लेकिन जो ऑक्सीजन तो सब निहाती दरकार decomposition पाई से नगी warm और moist environment कोन आराम से decomposition होबो ଆଉ लो टेम्परेचर ठंडा लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन रे कोन हो ना डिकम्पोज स्लो हो जेना हम फ्रीज रे तळ खाइबार को काहे ना सीजन रे डिकम्पोज न हो लो टेम्परेचर अछि तापर बंद भी अछि एनारोबिक भलिया कंडीशन रे सृष्टि होछि तो सेति पई लो और एनारोबिक कंडीशन रे कोन हो ना डिकम्पोजिशन स्लो हो तापर लिखिबा एनर्जी फ्लो तापर हम कोन पढिबा ना एनर्जी फ्लो कोन And except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on the earth. खाली जो deep sea रो जो hydrothermal ecosystem तक रोड अलग ecosystem अच्छी चला भी हम पढ़िया दरकार नहीं. Sun is the only source of energy for all ecosystem. Out of incident solar radiation, less than 50% is less than 50% is less than 50% is कौन ना photosynthetically active radiation by far less than 50% of it is photosynthetically active radiation जतिकि हमर solar radiation हमर पड़छ ताइ भितरे less than 50% is photosynthetically active माने photosynthetically active radiation माने ताको प्लांट माने निजर photosynthesis से यूटिलाइज कर परिबे सेही wavelength of radiation तक we know that plants and photosynthetic bacteria autotrophs fix sun's radiant energy to make food from simple और inorganic materials तो हम जानते हैं जैसे हम सिंपल inorganic material रो फूड केमती बनाते हैं ना प्लांट को ना सन की यूज करके तापरे सन ना plants capture only 2 to 10% of PAR and this small amount of energy sustains the entire living world तो प्लांट माने कौन करती जब PAR मिलता है लेस देन 50% तार 2 to 10% को ही यूटिलाइज कर पारते कोन ना एनर्जी प्रोडक्शन करके हम लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करिया पाए तने पूरा धर जदी 50% जदी 2 to 10% को से पीआर यूज करते तने पूरा इंसिडेंट सनलाइट रो 1 to 5% से यूज करते पूरा इंसिडेंट सनलाइट रो 1 to 5% यूटिलाइज करते तने एते कम परिमाण रे सोलर एनर्जी यूज करिकि भी हम पर लिविंग वर्ल्ड कोन करछ ना सस्टेन होछ हम लिविंग वर्ल्ड पर जिंदा रही छी
So it is very important to know how the solar energy captured by plants flow through different organisms as an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers. Is this keeping with fast law of thermodynamics? Obviously. Currently, like you, ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କ'ଣ ନା further ecosystems are not exempt from second law of thermodynamics. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ecosystem ନା second law of thermodynamics ରୁ exempt ନଥାନ୍ତି. ମାନେ କ'ଣ second law of thermodynamics କ'ଣ ଯେ ଯେତିକି ତମେ ଏନର୍ଜି ଇଏ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ ଯଦି ସମାନ ଯଦି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିଛି ଏନର୍ଜି ହିଟ୍ ଡିସିପେଟ୍ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ the need a constant supply of energy ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ କ'ଣ କରାଯାଏ କେହି ବେଳେ ବି ଏଫିସିଏନ୍ସି 100% ହବନି କୋଉଠିରେ ବି efficiency 100% ହବନି they need a constant supply of energy to synthesize molecules they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness disorderliness ଆମେ physics ରେ ପଢିଛେ entropy ଯେ disorderliness entropy ବଢିଲେ energy loss ବଢିବ ତ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛି they need a constant supply of energy to synthesize molecules they require second law of thermodynamics partly second law of thermodynamics follow करे तापर ସେମାନେ କ'ଣ they need a constant supply of constant supply of energy need କରନ୍ତି to synthesize molecules that they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness second law of thermodynamics follow କରନ୍ତି the green plant in the ecosystem are called producers. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous or woody plants. Likewise, producers in an aquatic system are various species like phytoplankton, algae, and higher plants. Phytoplankton or algae or higher plants are aquatic ecosystem or primary producer. Our terrestrial ecosystem is woody plants, herbaceous plants are primary producers. We have read about the food chains and webs that exist in the nature. Food chain or webs with them छोटा बड़ा पड़ी पड़ी अस्तित्व. So starting from the plant or produces food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on the plant or on other animal and in turn is food for another. तो मतलब food chain ना किंतु ना animal जिन plant को खाएगा से animal को भाई भी food ही जाए पारे. The chain or web is formed because of this interdependency. The chain or web is formed because of this interdependency. The no energy that is trapped into an organism remains in it forever. वो भी energy जो गोटे organism जो खाऊची producer खाऊची ता पाकरे energy trap ही करवेनी तारे heat पावे dissipation हुए अब मोला पर भी सड़ा तो ताकू तो अन्य बारी खाने से तरह भी energy transfer हुए the energy trapped by the producer cells is either passed on to the consumer or the organism dies. Death of an organism is the beginning of detritus food chain or web. Detritus food chain माने कौन ना decomposition मार्ग ने जो food chain हुए ताको detritus food chain by web कहते हैं. Death of an organism is the beginning of detritus food chain. All animals depend on plants directly for their food needs. Since they are hence called consumers. And also heterotrophs plants ମାନେ କହନ୍ତି autotrophs ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ plant ଉପରେ depend କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି heterotrophs if they feed on the producer the plant they are called primary consumer if they feed on the producers the plant they are called primary consumers if the animal eat another animal which in turn eat the plant are called secondary consumers ମାନେ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଲା primary producer ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇଲା ସେ ହଉଛି primary consumer primary consumer को ଯିଏ ଖାଇଲା ସେ ହଉଛି secondary consumer ଜଣେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ହଉଛି tertiary consumer ତାର ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି likewise you could have tertiary consumers too obviously the primary consumers will be herbivores so ଲେଖିଛି obviously primary consumers କିଏ ହେବେ ନା herbivores ମାନେ ହେବେ କାହିଁକି carnivores ମାନେ ତ plant ଖାଇବେନି ତ primary କିଏ ହବ ନା herbivores some common herbivores are insects birds mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. There are some common herbivores किए ना insect birds mammals in terrestrial ecosystem और mollusks in aquatic ecosystem. तो नेटा मन रखिए किए को ecosystem में किए होची primary consumer और terrestrial तो तुम जानी जो insect birds mammals होती terrestrial ये herbivores. The consumers that feed on these herbivores are carnivores and more directly primary carnivores. तने हमें प्राइमरी कंज्यूमर देखते हैं तापर एटे प्राइमरी कार्निवोर्स देखले कार्निवोर्स ना हार्बिवोर्स को जे खाइला से प्राइमरी कार्निवोर्स आ तापर कार्निवोर्स को जे खाइला से होती सेकेंडरी कार्निवोर्स
The primary carnivores को जे कहा है वो secondary carnivores. A simple grazing food chain is depicted below. Grazing food chain mainly terrestrial food chain है एटा था grazing food chain था ताको लिखा है जी कौन ना grass producers ताको goat खाया से primary consumer ताको main खाया से अलग secondary consumers से कौन है ना secondary consumer है তারপর detritus food chain. Detritus food chain মানে কোন decomposition ର food chain decomposition ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ କୁହାଗଲା detritus food chain. The detritus food chain begins with the dead organic matter. Detritus food chain କୋଉଠୁ start ହୁଏ ନା begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. Mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter. Detritus ସେମାନେ nutrient requirement କେମିତି ହାସଲ କରନ୍ତି ନା डेड ऑर्गेनिज्म by detritus को degrade करके dead organic matter by detritus को degrade करके these are also known as saprotrophs. sapro माने to decompose. These are also called saprotrophs. एटा मन रखिबो saprotrophs कोन एग्जाम तो जते आसे पुणी भूली जो saprotrophs को किछु गोटे थिला बोली these are known as saprotrophs. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ decomposers ମାନେ ନିଜର କେମିତି କରନ୍ତି ନା decomposers ମାନେ ନିଜର stomach ଏରିଆର ଏରିଆର enzyme degrading enzyme ସବୁ proteolyte ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଆମ ବଡି ପ୍ରୋଟିନ को डिग्रेड କରିବା ପାଇଁ protease ଥାଏ ଅଛି lipid ପାଇଁ lipase ଅଛି carbohydrate ପାଇଁ amylase ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ enzyme ସବୁ ନିଜ ବଡିରୁ ରିଲିଜ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡା କଣ କରେ ନା complex organic material को complex dead organic material କଣ କରେ ना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट करे जेटा कि समय बाप पर निज भीतर को एब्जॉर्ब कर नियंती in an aquatic ecosystem GFC grazing food chain is the major conduit of energy flow एटा समय मन देखो एटा तुम कंफ्यूज ग्रेजिंग माने कि टेरेस्ट्रियल एरिया रे खाली काफ चलुची लो ग्रेजिंग समते नहीं तो एक्वाटिक इकोसिस्टम सबटो मेन की ना ग्रेजिंग फूड चेन As against this, in a terrestrial ecosystem, larger fraction flows through detritus food chain than the grazing food. तो ये जो सब important question समझते confuse बोल करते ना terrestrial ecosystem रे हो चुकी ना detritus food chain terrestrial ecosystem रे energy flow mainly detritus food chain रे हुए अब aquatic ecosystem रे energy flow mainly grazing food chain रे हुए Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. It is obviously detritus food chain grazing food chain is connected to. Example comes some of organisms of detritus food chains are paired to GFC animals. And in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, growers, etc. are omnivores. Those natural interconnection of food chains make it food web. तो कौन लिख रहा है? तो किए एटी omnivore किए काको खाऊची सही कथा लिख रहा है किए काको खाऊची जी डीएफसी ଅଛି ତାକୁ जीएफसी वाला भी ଖାଇ ଦଉଛି जीएफसी वाला को भी डीएफसी वाला डिग्रेड कर दଉଛି ତ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କାହାକୁ ବି ଖାଇ ପାରୁଛି ସେଇ ନେଇ ସବୁ କଲା କଣ ଫୁଡ ୱେବ ଫୁଡ ଚେନ୍ ଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ଲିନିୟର ଥିଲା ତଳୁ ଉପରକୁ ଥିଲା ଫୁଡ ଚେନ୍ ତାପରେ ଫୁଡ ୱେବଟା ହଉଛି ଯେଟା ଟ୍ରୁଲି ଆମ ନେଚର ଅଛି ଯେଟା କିଏ ବି କାହାକୁ ବି ଖାଇ ପାରିବ ତାକୁ କହିଲା ଫୁଡ ୱେବ Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. देखा निजर फीडिंग हैबिट को लेके निजर काम केते शिकार कर जन से अनुसार तमान गोटे रखा जायछि गोटे प्लेस रे रखा जायछि तको लेवल्स रे रखा जायछि based on the source of their nutrition or food organisms occupy a specific place in the food chain that is known as the trophic level तो निजर फूड हैबिट को नहीं कि समान फूड चेन दा गोटे लेवल रे समान थांती ताको कोन ताको ट्रॉफिक लेवल कोनती तो कौन थे ना निजर ट्रॉफिक लेवल कौन थी प्रोड्यूसर्स बिलोंग द फास्ट ट्रॉफिक लेवल herbivores द प्राइमरी कौन सेकंड एंड कार्निवोर्स इन थर्ड एंड तापर सो ऑन यानी कौन लगला प्रोड्यूसर्स माने कौन था ना फास्ट ट्रॉफिक लेवल herbivores माने कौन था ना सेकंड ट्रॉफिक लेवल और कार्निवोर्स माने कौन था ना थर्ड ट्रॉफिक लेवल था कार्निवोर्स माने थर्ड ट्रॉफिक लेवल तापर प्राय सेकंड कार्निवोर्स माने फोर्थ ट्रॉफिक एंड सब ट्रॉफिक लेवल से था तो ये कौन लगला जे ट्रॉफिक लेवल्स कौन देखला ना ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ନିଜର ଖାଇବା ହ୍ୟାବିଟ କୁ ନେଇ ଯଦି ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲେବଲ ରଖା ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରଫିକ ଲେବଲ କୁହାଯାଏ ଯଦି ସିଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ରଖା ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରଫିକ ଲେବଲ୍ସ ସେଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଥାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରଫିକ ଲେବଲ ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ ଥର୍ଡ ତାପରେ ହାର୍ବିଭର୍ସ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ कार्निवोर्स ମାନେ ଥର୍ଡ ରୁ ଥାନ୍ତି ତ ଏମିତି ସବୁ ସୋ ଅନ୍ ଚାଲଥାଏ ଏଠି ଲେଖିଲା ସେଇ କଥା the producers माने फास्ट ट्रॉफिक लेवल था एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन एंड ट्रीज तापर एटी प्राइमरी कंज्यूमर माने होचंती सेकंड ऑफ हर्बिवर्स माने
herbivores ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି zooplankton grasshopper cow ତାପରେ carnivore birds and fish and wolf ତାପରେ fourth trophic level ଥାନ୍ତି top carnivore secondary carnivore ସେଟା main ଆଉ lion ତ ଏଇଟା ହଉଛି tertiary consumer ଏଇଟା ହଉଛି trophic level diagrammatic representation of trophic level in an ecosystem. The important the important point to note is that the amount of energy decreases at successive trophic level. An important point कौन the amount of energy decreases at successive trophic level. When an organism dies, it is converted to detritus or dead biomass. It serves as an energy source for the decomposers. Organisms at each trophic level depend on those at lower trophic level for the energy. बड़ी लिखला जे organism जो माने सब ऊपर trophic level रे थांती ସେମାନେ lower trophic level ରେ energy ଉପରେ depend କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ proper amount of energy ସବୁବେଳେ decrease ହେଇ ଚାଲେ each successive trophic level ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା important line amount of energy decreases at successive trophic level. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called standing growth. ସବୁ trophic level ରେ ଗୋଟେ certain time ରେ କଣ ଥାଏ a certain mass of living material at a particular time ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି standing crop. Standing crop definition here. The standing crop is measured as the mass of living organisms. Standing crop means biomass or the number in a unit area. The biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. The biomass को fresh or dry weight से सब calculate करती. The standing crop को biomass by number of organisms से calculate करती. Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. लाइट वेट कार वाटरमेलन बेसी पानी अच्छी काउ को बेसी पानी नहीं तो पानी थोड़ी ना समय प्रोडक्शन कर मैन तो समय ऑर्गेनिक मेटेरियल प्रोडक्शन कर ड्राई वेट जी थी से अनुसार ही हमें बायोमास को कैलकुलेट करवा द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ग्रेजिंग फूड चेन रेस्ट्रिक्शन द एनर्जी फ्लो एट 10% लो एटा सब मन को 10% लो रे एनर्जी फ्लो करे only 10% of the energy transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels, producer, herbivores, primary carnivores, secondary carnivores in the grazing food chain, but लिखला grazing food chain केते भी लेवल हे परिबो तने एटी लिखला जे सन रो असला हीट असला फास्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर माने खाଇବା बनेले तार सेकंड ट्रॉफिक लेवल रे प्राइमरी कंज्यूमर माने हेrbivores सेटी पुनी सब जगह तमे देखुछ हीट डिसिपेट होची हीट डिसिपेट सेट पे 10% लो 90% हीट डिसिपेट होची 10% अन्य नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाउची सेट पे को आला कोन 10% लो को आला सेट पे को कोला 10% लो को आला. The ecological pyramid. You must be familiar with the shape of a pyramid. The base of a pyramid is broad and is narrowed down the apex. One gets a similar shape whether you experience food or energy relationship between organisms at a different level. जैसे हमें food organism ମାନଙ୍କର food ଆଉ energy relationship को लेके हमें diagram बनेगा जो तन से ଗୋଟେ pyramid भलिया हबो. This relationship is expressed in the term of number, biomass, energy. Number biomass और energy एटा सब रिलेशनशिप को नंबर biomass और energy रे डिपिक्ट करा जाए. The base of each pyramid represents the producers or the first trophic level while the apex represents the tertiary or top level consumers. The three types of ecological pyramids that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. हम तो देखले जे number, energy और biomass को लेके हम pyramid बनो तने तीनटा ecological pyramid कौन ना pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. मैंने नंबर को जब कैलकुलेट करने ताको पिरामिड ऑफ नंबर को आला जब सब ट्रॉफिक लेवल रो बायोमास को हमें कैलकुलेट करके बनेले ताने ताको पिरामिड ऑफ बायोमास को आला और यदि एनर्जी को नहीं काम करो तो पिरामिड ऑफ एनर्जी को आजो तब हमें लिखले फर्स्ट फिगर 12.4 रे कोन अछि ना पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्लासलैंड इकोसिस्टम एटा कोन मन रखिबो क्वेश्चन पर डायरेक्ट जोटा कोन এই পিরামিডটা কাগো ডিপেন্ড করে না কাগো ডিপেন্ড করে the pyramid of numbers in a grassland ecosystem. Only the three top carnivores are supported in an ecosystem based on the production of nearly 6 million plants. एटी लिखला जे पूरा जो एटी प्रोड्यूसर थिले 6 मिलियन पाखापाखि जो प्रोड्यूसर अछंती तार प्राइमरी कंज्यूमर जो कमी गला तापर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कमी गला तापर कोन हला ना लास्ट को टर्शियरी कंज्यूमर ओने तीनटा रहला तो सेठी लिखला जो टर्शियरी कंज्यूमर अछंती जो तीनटा टर्शियरी कंज्यूमर अछंती ସେମାନେ କାହା पे सपोर्ट रे अछंती ना 6 मिलियन प्रोड्यूसर माने तीनटा टॉप कार्निवोर सपोर्ट करछन एउडी तमे जाय पदो 10% रूल से केते कम एनर्जी नेक्स्ट लेवल को जाय एटा शो करछ तापर कोन लिखला द पिरामिड ऑफ बायोमास तापर कोन अछि ना पिरामिड ऑफ बायोमास सो द शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल तो लिखला
बायोमास प्लांट्स मान प्लांट्स जदि नंबर अधिक रहिबो प्लांट्स जदि अधिक नंबर रहिबो प्लांट तने तांकर बायोमास भी बेसी रहइबो तापर छोट छोट ता प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवर्स माने कोन ना डियर हरिण छेली एमाने सब होची प्राइमरी कंज्यूमर माने प्राइमरी कंज्यूमर बा हार्बिवर्स तमका नंबर तो बहुत कम तांका बॉडी वेट भी कम तांका बायोमास भी कम होबो तापर सेकेंडरी कंज्यूमर तो आहुरी कम होबो टर्शियरी कंज्यूमर तो आहुरी कम होता सेट लिखा जे पिरामिड ऑफ बायोमास होचे sharp decrease in biomass at higher trophic level तापर एटा सब important question आसे ना inverted pyramid of biomass of small standing crop of phytoplankton supports a large standing crop of zooplankton एटा होची aquatic environment कोन हुए aquatic environment कोन हुए ना एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को कौन करे से पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ जू प्लैंक्टन को सपोर्ट करे सेटा एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास तमे भी निज बही साइड रे एटी लिखि दियो काहे एटा एग्जाम रे आसे पिला माने कंपेयर बायोमास रो ना नंबर रो एक्वाटिक रो ना टेरेस्ट्रियल रो डेट्रिस्ट्रियस रो ऑफ बायोमास त एटा ले एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखा जाए तापरे एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी एटी हम 10% लो देखि पारछु ये फर्स्ट 10,000 थिला त 10% 1000 त 10% 100 10% 10 जूल तो एमती सब एनर्जी गला तने एटा कोन गले ना आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी देखो एटी 1 मिलियन थिला एटा 10,000 गला मात्र 1% तो एटी देखले जे primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into electricity. I'm sure पढ़ते photosynthetic active region तिला केते less than 50% ला तार 2 to 10% मान यूज करी पारतले तो 1% पूरा सोलर एनर्जी जितके असलो तार 1% ही प्राइमरी कंज्यूमर्स माने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माने बने परले any calculation of energy content biomass or number set to include all organisms at all tropic level. No generalization we make will be true if we make only few individuals at any tropic level into account. Also, a given organism may occupy more than one tropic level symptoms. एटा important करता है एक जे गोटे organism more than one trophic level भी consume करबा जंते हम ह्यूमन रो जे एग्जांपल लेबा हमें टॉप कार्निवोर हे परिबा काहे टॉप कार्निवोर काहे अन्य कार्निवोर ऑर्गेनिज्म काहे कि बा घास माने वेजिटेबल्स वेजिटेरियन खाय खाय के हमें प्राइमरी कंज्यूमर भी हे परिबा हार्बिवर्स बोले भी कोइ परिबा तो सीडीज लागछि गोटे ऑर्गेनिज्म ढेर गुडा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई करि पारे आ कोन ना से example lectures para is the primary consumer when it eats its food piece and a secondary consumer when it eats insects and worms. Lectures para example lecture. In most ecosystems, all the pyramids of number, energy, and biomass are operate. So most ecosystem pyramid of number of energy and biomass operate. Basic producers are more in number and biomass than herbivores. The herbivores are more in number and biomass than carnivores. So like the producers man herbivores to base rebe herbivores man carnivores to base rebe also energy rebe so yeah there are exceptions to this generalization if जमती कि हमें देखे थे exception कौन ना हमें aquatic environment inverted pyramid of biomass देखते थे दूसरे के तो प्रोड्यूसर माने ना हार्बिवर प्रोड्यूसर्स माने कम बायोमास थे बट कंज्यूमर्स माने बेसी बायोमास थे the pyramid of biomass is generally inverted. So generally inverted because the biomass of fishes far exceed that of phytoplankton. And fish pyramid of energy is always upright and can never be inverted. The pyramid of energy is always upright and can never be inverted because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy of pyramid indicates the amount of energy present at the each trophic level in a given timeline or annually per unit area. pyramid of energy कहीं सब बड़े ऑपरेट थे कहीं से मैं 10% रूल फॉलो करते कहीं ना एनर्जी सब बड़े गोटे पर्टिकुलर टॉपिक लेवल आउट पर्टिकुलर लेवल को किछि लॉस होला पर ही जाए तो सब बड़े कम ही जीवो सेति पई सब बड़े कोन ना ऑपरेट पिरामिड ऑफ एनर्जी सब बड़े ऑपरेट सेति पई थाए. However, there are certain limitations of ecological pyramids, such as it doesn't take into account of same species belong to or more trophic level. So, the ecological pyramid data consider करें कि गोटे species
टू और मोर ट्रॉफिक लेवल को भी बिलोंग कर पारे से गोटा स्ट्रिक्टली गोटे ट्रॉफिक लेवल को लेके करे इकोलॉजिकल पिरामिड्स गुडा इट एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन एटा एज्यूम कर कोन सिंपल फूड चेन जोटा केबे हम समथिंग दैट almost never exist in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramids, even the place vital on ecosystem. तो एटा लिखले कौन ना limitations of pyramids because limitations of ecological pyramids आमे लिखवा कौन ना फास्ट से फूड वेब को से कंसिडरेशन लेवल आनी किस कोटा स्पेसीज अलगा अलगा ट्रॉफिक लेवल रे रही परिवो और साप्रोफाइट्स मान को भी से जगह देलानी डिकम्पोजर्स मान को तो से जगह देलानी डिकम्पोजर मान भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते तो सेटा होची इकोलॉजिकल पिरामिड कोन ना लिमिटेशंस इकोलॉजिकल लिमिटेशंस कोन एवडा को तापर तुम माने एटा समरी गुडा पड़ी समरी गुडा केते केते इंपोर्टेंट ये देता है इंपोर्टेंट डेफिनेशन बाय इंपोर्टेंट लाइन देता है और समरी रे पूरा चैप्टर को से शॉर्ट रे पूरा ये कर दिए शॉर्ट रे कोन करे तो ना ये कर दिए जेमति आगो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थला एबे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं एठे हम देखिबा एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल energy flow is unit first plants capture the solar energy and then food is transformed from producers to decomposers organisms of a different trophic level in nature are connected to each other by for food energy relationship forming food chain the storage and movements of nutrient cycling हमें देख लेना nutrient cycling एवं थर रखनी अगर पुराना बरे nutrient cycling थला एतर नहीं तर हम देखिबा कोन ना the storage and movement of nutrient elements so the various components of ecosystem is called nutrient cycling तर nutrient cycling definition दे दीची the storage and movement of nutrient elements through various components of ecosystem is called nutrient cycling. Nutrients are repeatedly used through this process. Nutrient cycling is of two types. Nutrients is of two types. ଗୋଟେ ହଉଛି gaseous and sedimentary. Nutrient cycling ହଉଛି two type ଗୋଟେ ହଉଛି gaseous ଆଉ sedimentary. ଯେଟା gas ଆଉ sedimentary ମାନେ ଯେମିତି ତଳେ ବସି ଯେମିତି wet ଥାଏ. ତ gaseous ଆଉ sedimentary nutrient cycling ଏଟା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର nutrient cycling. Atmosphere or hydrosphere is the reservoir for the gaseous type of cycle. Atmosphere and hydrosphere is the reservoir for gaseous type of cycle. In the carbon mainly carbon dioxide form में ही हम environment सबुठ बेसी अछि हम बायोस्फीयर रे कार्बन रो सबुठ सो ये होउची हमर एटमॉस्फेयर कार्बन रो रिजर्वर होउची हमर एटमॉस्फेयर whereas earth's crust is the reservoir earth's crust is the reservoir for sedimentary type in the phosphorus gaseous type ପାଇଁ ହବ atmosphere ଟା ହବ gaseous type ପାଇଁ reservoir ଆଉ sedimentary ପାଇଁ ଆମର earth ର crust ଟା ହବ reservoir products of ecosystem processes are known as ecosystem service and the purification of air and water by forest products of ecosystem processes को ecosystem service कहନ୍ତି ଯେମିତି purification of air or water by forest ତ ଏଟା ତମେ ସମरी ପଢି ଦो ଭାଇ ଯେ ଏଟା ଆମର मेन टॉपिक रे नहीं मैंने एग्जाम रे आसीबे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से एग्जाम रे पचार देव काहे तम समरी रे अछि बुक रे भी अछि filling the plants are called as producers because they fixed carbon dioxide producer कहନ୍ତି in an ecosystem dominated by trees the pyramid of number सब बड़े ecosystem dominated by tree अछि तने pyramid of number सब बड़े upright हबो in an aquatic environment the limiting factor for productivity is sunlight न था productivity से पे sunlight आराम से deep area को मिलेंगे sunlight common attributes in our ecosystems are earthworm like the common attributes in our ecosystem are earthworm and microbes bacteria the major reservoir of carbon on the earth is atmosphere which one of the following has the largest population in a food chain producers obviously population decomposers भी है पर जैसे बैक्टीरिया का है तो decomposers भी पर बट हमें यदि फूड चेन जेतु भी हमें डेट्रिस फूड चेन नाम पिरामिड देखिबा ताने प्रोड्यूसर्स हेबे सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल कोन हबो जू प्लैंकटन हबो पहले फाइटोप्लैंकटन तब जू प्लैंकटन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स के सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जदी हमरो ये माने पड़ले जदी हमरो हार्बिवर्स मान को जदी जे खाए से हो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हार्बिवर्स मान हे परिबे then one of the above. What is the percentage of photosynthetic activities in the instead of 50%? PR 50%. तापर एट द डिस्टिंग्विशन तो करि परिबो एवडा भी तम सड गुडा काम चैप्टर लेखा हिची सडा के भी तम डिस्कस करि परिबो तो आज हम चैप्टर कोन पढले आज हम चैप्टर पढले इकोसिस्टम एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हो इकोसिस्टम तापर हम इकोसिस्टम और चैप्टर को कंपोनेंट विषय पढले
प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग टा समरी रे देछि एबे देने सेटा आगुर थिला आगुर हमर चैप्टर थिला बट एबे नाही एबे चैप्टर को अपडेट कर देछि तो ए बळे आज इकोसिस्टम चैप्टर टा फिनिश होला